ये आओ मैं बताऊं तुम्हें राज की बात, तुम्हारे हाथ एक खजाना लगे रातों रात। कहानी नहीं लड़के अब तो ये हकीकत बन गई है, पढ़ना लिखना अब आसान, दुनिया आगे बढ़ रही है। तो इंतजार कैसा, अपना मकसद तुझे याद, दुनिया का हर एक जवाब जैसे रखा तेरे हाथ पर। बदलो अब अंदाज थोड़ा, बदलो ये पुरानी रीत, आगे दुनिया से रहना है, पक्की है तुम्हारी जीत। मकसद है तुम्हारा के कुछ बन के ही दिखाना है, मकसद है हमारा सारी दुनिया को सिखाना है। अब रहा ना दौर वो, अब नया दौर आना है, दुनिया को बता दो अब ये मकसद का जमाना है। दौर है तुम्हारा, मकसद है तुम्हारा, उठे कलम लिखे वक्त जैसे सब है तुम्हारा। एक वक्त एक आवाज देखे सब खोले राज, बदलेगा इतिहास, नया दौर नई साज। कोई भी सवाल हो जवाब मेरे पास, कामयाबी की खुली हुई किताब मेरे पास। चाहे कोई भी हो मसला, कोई भी हो बात, रखा एक एक चीज का हिसाब मेरे पास। खान on the beat, hey. Hi, dear students. How are you? Hoping you would all be fit and fine. My name is Zafar Ismail and I'm your English instructor here. What we are going to discuss today is a comprehensive package. Whatever we talk comes under the umbrella of parts of speech, and many test takers find it difficult to go through parts of speech, mainly because of many myths and misunderstandings associated with parts of speech. But today, I'm going to break this shackle, making you feel parts of speech are not that difficult as you think of. IB alums anti-test prep. Nothing venture, nothing have. The more you're serious, the better it is for you. There is no question about it. Now, here comes the myths related to parts of speech. Many people think that parts of speech are too complicated to comprehend. Some people consider that they are dry sort. Some people consider this it's very difficult for them. Some people are of the view that parts of speech have meaningless rules and regulations and which stand nowhere. And some people reckon that they are limited only to native people. And some people think that this is only for native people and naturally learned. This is not learned, through some methods. They are all myths and misunderstandings. Let's say bye-bye to all the myths and misunderstandings related to parts of speech. As you can see on the screen, I'm going to give you a small sentence and dissect this sentence, which covers all the parts of speech, making things easy for you to understand. And you may still feel that this is not that difficult as you thought of. All parts of speech at a glance. A small sentence. Wow, his doggy skillfully leaps up so high. It's a small sentence, but covers all the parts of speech. Wow is interjection. His doggy is a noun phrase. Dog's name is Jax, and we can use it as a pronoun for this. Skillfully, adverb, leaps, verb,
Up, preposition. So, adverb. High, adjective. Now we have dissected this. A small sentence covers all the parts of speech. These are parts of speech. And many people are scary of it, while it's not that scary. Now, look at the direction of arrows. Wow is interjection. His doggy, noun or noun phrase. Skillfully, adverb. Leaps, verb. Up, preposition. So, adverb. And then, last but not the least, high is an adjective. And after we go through all the lecture, I'm going to give you yet another sentence to dissect. And that is going to tell you how much you would have understood. And I'm sure that at the end of the day, you will be graduated in parts of speech and you will feel enriched in it. All parts of speech, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो आर्ट होते हैं. इसमें थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. कुछ ऑथर्स जो हैं उसको जो आर्टिकल है आर्टिकल को इसके अंदर लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये 9 है, मगर ज़्यादातर का इत्तेफाक ये है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये आर्ट होते हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं. जितनी भी हम बातें करें वो जो हमारी बात होती है, जो हमारी टॉक होती है, उसके जो हिस्से होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. नथिंग गोज बियॉन्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. नाउन, प्रोनाउन, verb, adverb, preposition, adjective, conjunction, and of course interjection, as you can see on your screen in different color schemes. Facts about noun. दुनिया में जिस भी किसी चीज का नाम है, चाहे वो नजर आती है, चाहे उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, चाहे उसको टच कर सकते हैं, चाहे उसको देख नहीं सकते, तमाम अगर कोई भी चीज है उसका कोई नाम है उसको हम नाउन कहते हैं. ये पेन है मेरे पास, ये नाउन है. ये स्क्रीन है, ये नाउन है. किताब नाउन है. सिटी नाउन है. कंट्री नाउन है. थॉट्स नाउन है. तो कोई भी चीज जिसका नाम हो दुनिया के अंदर वो नाउन है. Common noun. These are general nouns that refer to a class or group of people, places, things, or ideas. Dog, city, book, person, thought, etc. Proper noun. आप अपना नाम लिखते हैं, जो पहला लेटर होता है आपके नाम का उसको आप कैपिटल लेटर से लिखते हैं. इसी तरह किसी सिटी का नाम लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं. किसी मुल्क का नाम लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं. कोई टाइटल होता है उसको भी आप कैपिटल लेटर से लिखते हैं. तो बस यही प्रॉपर नाउन है. चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए, चाहे वो सेंटेंस के मिडिल में आए, चाहे वो सेंटेंस के एंड में आए, जो भी प्रॉपर नाउन्स हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. सिंपल इज दैट. कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट मीन्स सॉलिड, विच कैन बी फेल्ट, सीन, हर्ड, टेस्टेड. अब ये जो पेन है ये क्या है? ये कॉन्क्रीट नाउन है. ये जो स्क्रीन है ये कॉन्क्रीट नाउन है. आपकी किताब कॉन्क्रीट नाउन है. फर्नीचर कॉन्क्रीट नाउन है. नाउ लेट्स गो टू द एग्जांपल. द डिशेस वर स्टैक्ड ऑन द काउंटर नियर द सिंक. नाउ यू सी इन द सेम सेंटेंस देयर आर 3 वर्ड्स अंडर द शेडो ऑफ येलो कलर. Dishes, counter, and sink. All of them are concrete nouns. Let's get down to the second example. After the snow fell, we took our sleds to a big hill. Here you can see 2 nouns under the shadow of yellow color. Snow and sleds. But there is one more noun, concrete noun in this sentence. Can you find it? Try to detect.
It's not that difficult. When you have understood dishes, counter, sink, snow, sleds are concrete noun, so you are not going to find it difficult to get the concrete noun which is not under the shadow of yellow color. I hope that you would have found it. Now, hills. Here, hill. Pretty simple. Abstract noun. आपने कभी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का नाम सुना होगा. Abstract art is said to be the most difficult art among all the arts. Why? Because there is an art within the art. आपने कभी देखा होगा कि एक पिक्चर होती है, जब हम उसको गौर से देखते हैं तो उसमें एक और पिक्चर नजर आती है. That is most complicated art and this is not a kid stuff. तो इसी तरह हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं and we perceive these nouns. We cannot sense. For example, decision, thought, opinion, pain, suffering. Now let's go to the example. Sorrow descended upon the family. Sorrow means grief. गम फैमिली के अंदर सरायत कर गया था. तो सोरो जो है वो इधर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. वी कैन ओनली परसीव दिस. Many have knowledge without possessing wisdom. Now see knowledge and wisdom. You see knowledge and wisdom. Both of them are abstract noun. They can be perceived, not sensed. Collective noun. बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको हम एक मजमुए में कर देते हैं और वो मजमुआ जो है वो एक ही कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल एक टीम है, वो 11 लोगों पर मुश्तमिल है, 11 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है तो 11 खिलाड़ी. बट जब ये टीम बन जाती है, जब ये 11 खिलाड़ी टीम में आ जाते हैं तो वो टीम जो है वो सिंगुलर ट्रीट की जाती है. इसी तरह आपकी फैमिली में कई लोग होंगे, मगर आपकी फैमिली जो है वो एक ही ट्रीट की जाएगी, सिंगुलर ट्रीट की जाएगी. इसी तरह ज्यूरी होती है विच कंप्राइजेस अपॉन मोर देन वन जजेस हु रेंडर वर्डिक्ट. तो ज्यूरी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, ऑल्दो ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ more than one judges. For example, committee, team, jury, staff, etc. The committee has been constituted to investigate the reasons of massive corruption. Here, committee is collective noun. कमेटी जो है वो एक है और उसमें एक से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं और भी ज्यादा हो सकते हैं. तो कमेटी को जो हम ट्रीट करते हैं, कमेटी इज ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड वी कॉल दिस कलेक्टिव नाउन. द फिल्म क्रू वर्कड टायरलेसली टू कैप्चर द परफेक्ट सीन्स. नाउ हियर क्रू मीन्स स्टाफ. यू मस्ट हैव हर्ड क्रू मेंबर्स. स्टाफ जो है वो एक से ज्यादा हो सकता है, मगर जब उनको हम एक साथ जो है जमा करते हैं तो वो क्रू कहलाता है, अमला, और दैट इज कंसिडर्ड टू बी कलेक्टिव नाउन और हम उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं. हैव यू गॉट इट? नॉट दैट डिफिकल्ट. परहैप्स you thought that it would be too difficult to understand, but it's not that difficult as people consider. Compound noun. If you have studied chemistry, you are well familiar with the word compound. Compound noun जो होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स से मिलकर बनते हैं, मगर मीनिंग एक ही देते हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल डोर बेल है, डोर का मतलब अलग है और बेल का मतलब अलग है, बट व्हेन डोर बेल कम टुगेदर दे जनरेट ओनली वन मीनिंग. तो जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स का मजमुआ होते हैं और उनमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक ही ट्रीट किए जाते हैं.
और कुछ ऐसे होते हैं जो दो ट्रीट किए जाते हैं, उसमें स्पेस होता है मगर मीनिंग एक ही देते हैं, और कुछ एक से ज्यादा होते हैं, कुछ हाइफनेटेड होते हैं. नाउ लेट्स एक्सप्लोर गाइड बुक. हियर यू सी गाइड बुक, that is treated one word, guidebook. You cannot see any space in between these two words. And when you look at common sense, you must see a space between common and sense. This is also called compound noun, but these are two words which create space in between them. Decision maker, this is hyphenated, you see, hyphen in between decision and maker, so they are called hyphenated, but they are treated single word and they generate meaning of one word. Doorman, here door and man, both of them come together, one word. Dining room, one word. Mother-in-law, double hyphenated. You see, mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, sister-in-law, तो double hyphenated as you can see. Makeshift arrangement, आरजी बंदोबस्त. कहते हैं ना कभी कुछ लोग जो है बेघर हो जाते हैं सैलाब की वजह से, तो सरकार जो है उनको एक आरजी बंदोबस्त देती है, आरजी पनागा देती है, और जब when things settle they come back to their native place. Makeshift arrangement, this is hyphenated. Facts about pronouns. Pronouns वो होते हैं जो noun की जगह इस्तेमाल होते हैं. आप तमाम लोग जो हैं ये लेक्चर देख रहे हैं, मैं तमाम के नाम नहीं लेना चाहता, आप तमाम को यूं कह दूं, तो जो noun है उसकी जगह मैंने pronoun इस्तेमाल कर लिया. इसी तरह कोई शख्स है, अली, मैं अली नहीं कहना चाहता, ही कह सकता हूं. कोई लड़की है सोफिया फॉर इंस्टेंस, तो मैं उसको सोफिया नहीं कहना चाहता, मैं उसको शी कह सकता हूं. एक से ज्यादा है, दे कह सकता हूं उनको मैं. तो जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. अच्छा, बास लोग कहते हैं कि हम नाउन ही क्यों इस्तेमाल ना कर ले, प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल करें. अच्छा, अगर हम नाउन इस्तेमाल करें तो इट लुक्स टू बी ऑकवर्ड. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. एक लड़का है आमिर. अब अगर मैं ये कहूं कि आमिर बैंक में काम करता है, आमिर अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करता है, आमिर कराची में रहता है, आमिर पंक्चुअल है, डजंट इट लुक टू बी ऑकवर्ड? यस, इट लुक्स टू बी एब्सर्ड. तो एक मरतबा आमिर कहती है, फिर हम उसके बाद कहेंगे कि वो ईमानदार है, वो बैंक में काम करता है, वो कराची में रहता है, तो नाउ इट डजंट लुक टू बी ऑकवर्ड. तो प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं यहां पर, और इसकी भी कई किस्में होती हैं. यहां पर आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ही, शी, इट, हिम, दे, एटसेट्रा. Indefinite pronouns. Do you understand what indefinite means? It is opposite to definite. Definite कहते हैं हम वाज़े. जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो हम कहते हैं डेफिनेट, ठीक है. और इनडेफिनेट गैर वाज़े. तो ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं ये इनडेफिनेट होते हैं. ऑल ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, एनीबॉडी, whoever. तो ये क्या है, ये वाजे नहीं है. अगर मैं कहूं ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम को तो मैं नहीं जानता, तो ऑल जो है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है. इसी तरह whoever जो है, जो कोई भी, whoever knows this fact, तो मैं तो whoever को नहीं जानता, तो ये गैर वाजे हैं. तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल है: ऑल, नन, सम, मैनी, few, anyone, everyone, someone, either, neither, each, both, whoever, whatever, so on and so forth. तो ये गैर वाज़े होते हैं. We call them indefinite pronoun. Possessive pronoun. Possessive pronoun क्या होते हैं? जिसके अंदर ओनरशिप होती है, जिसमें मलकियत होती है. अगर मैं कहूं कि दिस इज
हिज पेन, तो हिज क्या है यहां पर, ये पोजेसिव केस है। दे आर देयर चिल्ड्रन, तो देयर चिल्ड्रन हो गया, वो देयर जो है वो पोजेसिव हो गया वहां पर। योर, तो अब जहां पर भी मलकियत का इजहार होता है, जहां पर भी ऑनरशिप का इजहार होता है, तो वो जो है वो पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। दिस इज माई पेन, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई हैव सीन many test takers keeping reflexive pronoun into two different words like him and self. For instance, वो क्या करते हैं, him and self, यहां पर स्पेस दे देते हैं, जबकि ये गलत है। जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं they are considered to be one word, as you can see on your screen. Himself, themselves, herself, itself. But now let me come down to tell you why we use them. Reflexive pronouns are practiced to lay emphasis. Let me give you an example. अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने होमवर्क कर लिया क्या, आप कहते हैं जी कर लिया सर। अब मुझे डाउट है कि शायद ये होमवर्क आपने नहीं किया, और ये डाउट जो है वो आप तक भी पहुंच गए। अब आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू ट्राई टू मेक मी रियलाइज दैट यू हैव डन इट। अब आप क्या कहेंगे, सर आई हैव डन इट माई सेल्फ। सो वेन यू स्ट्रेस ऑन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑन माई सेल्फ, तो यहां पर यू आर मेकिंग मी बिलीव दैट एक्चुअली इट इज डन बाय यू। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर बेसिकली यूज्ड टू ले एम्फेसिस। और इसमें गलती नहीं कीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जितने भी होते हैं, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, दे आर वन वर्ड। रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपने टाइटल से ही बता देती हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या होगी। रिलेटिव प्रोनाउन मींस वो रिलेशनशिप पैदा करते हैं अपनी दूसरे क्लॉज के साथ, दूसरे सेंटेंस के साथ, पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, वर्ड्स के साथ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये पेन जो मैंने परसों खरीदा था काम नहीं कर रहा, अब इसमें रिलेटिव नाउन क्या है? देखें, ये पेन जो 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 है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो पूरी क्लॉज है जो मैंने परसों खरीदा था, ये रिलेटिव क्लॉज कहलाएगी। मैं ये भी कह सकता था ये पेन काम नहीं कर रहा, मगर जब मैं ये कहता हूं कि ये पेन जो मैंने परसों खरीदा था काम नहीं कर रहा, अब ये वाज़ेह हो गया कि ये पेन अभी इतनी जल्दी खराब हो गया, ये वही वाला पेन है, कोई खास पेन है। तो यहां पर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। तो यहां पर जो है वो रिलेटिव नाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है रादर। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, हु, होम, हुज, विच। अब इसमें देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल, द अम्ब्रेला दैट आई परचेस्ड लास्ट मंथ इज ब्रोकन। I think you can easily find out where relative pronoun is used in this particular sentence. I don't think that you are going to find it difficult. Yes, that. The umbrella that. ये जो that है ये relative pronoun है, और इसके साथ जो sentence आ रहा है that I purchased last month, this is relative clause. So you are killing two birds with one stone. एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं आप। ना सिर्फ यहां पर समझ में आ रहा है आपके रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, बल्कि रिलेटिव क्लॉज भी समझ में आ रही है, और रिलेटिव क्लॉजेस जो होते हैं वो भी आपके टेस्ट में आते हैं। तो यहां पर जो है ये दैट आई परचेज लास्ट मंथ, ये रिलेटिव क्लॉज है, और इसमें ये जो दैट है दैट इज प्रैक्टिस्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। Now let's come down to the second sentence. The car which is parked in the driveway needs a new battery. ये भी कह सकते थे the car needs new battery.
जब हम ये कहते हैं कि द कार नीड्स न्यू बैटरी, तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सी कार जो ड्राइववे में खड़ी हुई है या ड्राइववे से बाहर खड़ी हुई है या गराज में खड़ी हुई है, कहाँ खड़ी हुई है। मगर जब हम ये कहते हैं कि द कार विच इज पार्क्ड इन द ड्राइववे, तो अब यहां पर समझ में आ रहा है। और ये जो पूरी क्लॉज है ये रिलेटिव क्लॉज कहलाती है। और यहां पर जो विच इस्तेमाल किया गया है, दिस विच इज कंसिडर्ड टू बी relative pronoun, and the clause up to driveway is called relative clause. तो यहां पर relative clause का भी जो मुअम्मा है वो भी हल हो गया, और relative pronoun का जो मुअम्मा है वो भी हल हो गया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन pretty simple। बाज लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से नहीं समझते। WH वर्ड्स, WH फैमिली, what, where, when, why, how many, how much, whom, who, whose, how often, so on and so forth। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये इसमें सवाल होता है। Where do you live? What you doing? तो ये क्या है, ये जो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। फैक्ट्स अबाउट वर्ब्स। वर्ब्स वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ब सिर्फ अगर खाली एक वर्ब भी होगा तो वो पूरा अपनी जात में एक जुमला है। एंड वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड intransitive verbs. I guess you have got an idea about transitivity and intransitivity because my third session of BCAT is all about transitive verbs and intransitive verbs. If you have watched this lecture, you must feel enriched in transitivity and transitivity. Both transitive verbs और intransitive verbs, both verbs में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर if you haven't watched this, perhaps you find it difficult to grab it. Okay, now let me tell you superficially. Transitive verbs are those verbs which carry noun in order to give complete sense, and they are also used in passive voice. For instance, write, play, pay, eliminate. Let's put one of them in the sentence. I am writing an email. तो एन ईमेल जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो जो राइट है उसको जरूरत है ऑब्जेक्ट की। जब हमने इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाया तो इट गिव्स क्लियर सेंस। और द वर्ब विच रिक्वायर्स टू हैव ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू गिव कंप्लीट सेंस कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, एंड दैट इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट intransitive verbs. Intransitive verbs are those verbs which do not need to have object to give clear sense, to complete their sense, and they are not used in passive voice. For example, यहां पर आप देखिए play, write, request, rectify. They are considered to be transitive verbs and they can be used in passive voice. The verb that does not need to have receiver of action, receiver of the action means object, known as intransitive verb and cannot be used in passive voice like sleep, stand, sit, bleed, go. अगर मैं कहता हूं कि they are sleeping, does it generate the complete sense? Does it require object to give clearer sense? No. It gives its complete sense. They are sleeping. हाँ, ये तो हो सकता है they are sleeping fast. They are sleeping awkwardly. ये तो हो सकता है, मगर ये जो है ये एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पर स्लीप आप कभी भी नहीं देखेंगे पैसिव में इस्तेमाल हुआ हुआ, सिट कभी भी नहीं देखेंगे पैसिव में इस्तेमाल हुआ हुआ।
आप ब्लीड कभी भी नहीं देखेंगे ही इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली. तो प्रोफ्यूसली मीन्स वेरी मच. दैट इज एडवर्ब. दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट. वी नॉर्मली कंसिडर एडवर्ब एज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड वी गेट इट रॉन्ग. तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो इंट्रांजिटिवली एक्ट करते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिवली एक्ट करते हैं. जो ट्रांजिटिवली एक्ट करते हैं वो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हो सकते हैं. जो इंट्रांजिटिवली एक्ट करते हैं, जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिनको जरूरत नहीं होती अपना सेंस जनरेट करने के लिए, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और उनको हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं कर सकते. मगर एक वर्ब्स और होते हैं जो दोनों तरफ खेलते हैं. दे एक्ट ट्रांजिटिवली as well as intransitively. For instance, fly. A pilot is flying an airplane. इधर एयरप्लेन जो है वो ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं ये कहूं कि एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग इन द एयर, सो इन द एयर जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है. तो एयरप्लेन इज फ्लाइंग. It does not require object to generate its complete sense because it is already complete. तो यहां पर एक जगह जो पहला सेंटेंस है वहां पर ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ, और जो दूसरा सेंटेंस था एयरप्लेन इज फ्लाइंग इन द एयर, ये इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल हो रहा है यहां पर. लेट्स हैव फ्यू एग्जांपल्स. They have run a successful business over the past several years. Ab now you see, run is a verb here and business is object. Here run requires object to complete its sense. So here run is used transitively. Let's get down to the next sentence. The business has been running successfully for the past several years. अब here running does not have object. यहां पर run जो इस्तेमाल हुआ है that is used intransitively. It does not require object to complete its sense. तो run जो है now it is proven कि कुछ verbs ऐसे होते हैं जो which act transitively as well as intransitively. मगर keep one thing in your mind. They do not परफॉर्म मल्टीटास्किंग एट द सेम टाइम. एक वक्त में एक ही काम अंजाम देंगे. अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब हैं तो ट्रांजिटिवली एक्ट करेंगे, और अगर इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर उस जो है वो इंट्रांजिटिवली ही इस्तेमाल होंगे. तो एक वक्त में एक वर्ब जो है वो एक ही काम अंजाम देगा. Verbs are also divided into two parts: regular verbs and irregular verbs. Not that difficult, and I think you have already got an idea. But to do the formality, I'm letting you know this. The verbs which end in either D or ED to make their second and third form called regular verbs. The rest of them are irregular verbs. So regular verbs के एग्जाम्पल क्या होंगे आपके? Watch, appoint, eliminate, pay. ये जो हैं ये आपके रेगुलर वर्ब्स हैं. इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होंगे? राइट, ईडी पे खत्म नहीं हो रहा. कट, ईडी पे जो है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं है इसकी. कट इट नहीं है, कट कट कट. पुट जो है वो भी रेगुलर वर्ब है या नॉन रेगुलर वर्ब है. तो फ्लाई भी जो है वो इर्रेगुलर वर्ब है. अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि 95% जो वर्ब्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं, रेगुलर वर्ब्स होते हैं. ओनली 5% जो होते हैं वो नॉन रेगुलर वर्ब्स होते हैं, नॉन रेगुलर वर्ब्स होते हैं. तो आपको सिर्फ जो याद करने हैं
जो मेमोराइज करने हैं वो सिर्फ 5% करने हैं. इफ यू डू नॉट नो द पास्ट फॉर्म or past participle form of any verb, place either D or ED, you will be right 95%. Phrasal verbs. अब यहां पर देखें verb and preposition. जब verb और preposition का मिलाप होता है तो phrasal verb का जन्म होता है. यहां पर आप देखिए bring वर्ब है और अबाउट जो है वो प्रेपोजिशन है. अच्छा, जो ज्यादातर फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो अपने लिटरेरी मीनिंग नहीं देते हैं. अब यहां पर आप ब्रिंग का मतलब अलग निकालें, अबाउट का अलग निकालें और उनको जोड़ दें, ये मीनिंग वो नहीं होंगे जो ये आपका मीनिंग दे रहा है. तो इसका मतलब है ब्रिंग अबाउट मीन्स कॉज. तो यहां पर जो है हम फ्रेजल वर्ब्स जो है वी हैव टू मेमोराइज देम. यस, few of the phrasal verbs they generate their own meanings, like cut down, yes, decrease, drop by. If you do not know the meaning of it, you cannot extract its meaning of your own. Drop by means visit. Put up with, tolerate. Turn down, refuse or reject. Look down upon, insult or humiliate. Get over, control. Fall off, drop. Let off, to forgive. Make up for, to compensate or redress the balance. Put out, to extinguish. तो वर्ब और प्रेपोजिशन का जहां मिलाप होता है वहां पर फ्रेजल वर्ब का जन्म होता है. Adverb. A short while back I told you that at times title gives the whole story. We do not need to get to the bottom of something in order to understand if we comprehend the title well. Now adverb. Adverb basically two words और उनको मिला दिया गया है. आप देखें यहां पर एड एंड वर्ब. अब एक डी जो है वो हम क्रॉस कर देते हैं बट इट डज नॉट अफेक्ट इट्स प्रोनाउंसिएशन. इट विल रिमेन एडवर्ब. सो इफ वी लुक एट दिस वर्ड एडवर्ब, we have got the feeling that something which adds to the meaning of verb. Absolutely correct. Adverb qualifies the meaning of verb. Adverbs are words that describe a verb, an adjective, or another adverb. For example, when we say he laughs loudly, the adverb loudly describes the way he laughs. Now you see, loudly is adverb, and loudly बता रहा है कि ये किस तरह से एक्शन परफॉर्म हो रहा है. He laughs, but how he laughs? What method he uses to laugh? He laughs loudly. So here, adverb qualifies the meaning of verb. Let's have few more examples. My sister prepares food. अगर आप अपनी बहन को बोलें या उसके सामने बोलें my sister prepares food, it won't affect her. She would not be happy. मगर जब ये आप कहते हैं कि my sister prepares food deliciously, she would have a smile on her face and she would be happy. She would react positively. तो यहां deliciously जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? प्रिपेयर को. Now here my sister prepares food deliciously. Second example, he has arrived to the meeting. He has arrived to the meeting, simple sentence. One adverb also qualifies other adverb. Keep this in your mind as well. He has arrived extremely late to the meeting. Extremely is adverb and late is also adverb.
Let performs as adverbly and adjectively as well. तो यहां पर एक्सट्रीमली जो है वो लेट के मीनिंग के अंदर इजाफा कर रहा है. एक्सट्रीमली लेट. सो एक एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है. एनी क्यूरी? Now look at the image. Jan is well loved by her friends. Here is and loved verb tense, and in between them adverb is used. So Jan is well loved by her friends. उसके फ्रेंड्स जो हैं उससे मोहब्बत करते हैं. अब मोहब्बत तो करते हैं मगर कैसे करते हैं? बहुत ज्यादा करते हैं. तो जो वर्ब है यहां पर, जो वर्ब टेंस है, उसके मीनिंग में वेल इजाफा कर रहा है. ज्यादातर वर्ब्स जो होते हैं वो एल वाई पे खत्म होते हैं, मगर कुछ जो एडवर्ब्स होते हैं, रादर एडवर्ब्स जो होते हैं वो एल वाई पे खत्म होते हैं, और बहुत कम ऐसे होते हैं जो एल वाई पे खत्म नहीं होते. लाइक ऑलवेज, एवर, नेवर, सून, फास्ट, और दूसरे जो देखें टाइमली, एक्सट्रीमली, इमेंसली, ऑकवर्डली. तो ये जो है दे एंड इन एल वाई. तो ज्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं वो दे एंड इन एल वाई, एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एडवर्ब्स डू नॉट एंड इन एल वाई. Preposition. You know, the volume of preposition is well higher than any other parts of speech, especially in your test, in your entry test. You know the reason? There is a particular reason at the back of it. Because many prepositions do not follow rules, and we have to memorize them. Those who are good at study, those who love to read, they are good at prepositions. If you are not avid reader, you find it difficult to place accurate preposition. And इसका भी टाइटल देंगे, preposition. So prepositions वो होते हैं जो टाइम के बारे में बताते हैं, रिलेशन, लोकेशन जो होती है, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन. तो इन चीजों के बारे में बताते हैं जो प्रेपोजिशंस होते हैं. तो यहां पर क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, रिलेशनशिप्स, और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट. नाउ यू कैन सी almost 40 prepositions on your screen. Mostly these 40 prepositions are used, and there are 15 prepositions on top which are written in red ink from 2 to down. Why they are colored red? Because these 15 prepositions are used almost 90%. They are most commonly used prepositions. To shows direction and destination. It indicates point of time and point of location. In is used when something is in the space or a particular place. On, when there is physical connection. You see, my pen is on my palm. There is physical connection, between pen and palm. So we use on. Into is practiced when there is movement.
Kids are getting into their school van. Isn't it movement? Yes, it is. Of. Of shows relationship. Of. O double F. Of. That shows either removal or non-functionality. With, within, without, for are self-explanatory. By shows deadline. And it also means near. They live by the river. Or let me give you another example. He has to return my car by 6 o'clock. 6 o'clock is deadline, not later than. Up and down, both of them are opposite to each other. Above is same of over. Past, about, behind, they are self-explanatory. Since. Since is used for point of time. We are going to discuss since and for in upcoming slides in detail. Across from one point to another. Below, opposite to above. During, in the course of time. Under is commonly used. Beneath and underneath are formally used. They are also used in literature. Throughout, all over. Against, opposite to for. Now, there is confusion between beside and besides. I also found it difficult, actually in differentiating them in the past. But I overcame them with a bit of logic. One carries S and the other does not carry S. The beside, which does not carry S, means next to. Nobody is sitting beside me. Nobody is sitting next to me. And besides with S, that means in addition to. So the difference is about S. However, it many times creates confusion. Along, down. They are walking down the road. They are walking along the road. Between, involving two objects. Among more than two objects. She is sitting between her parents and he is standing among guests. So more than two guests. Beyond, farther. Around, self-explanatory, surrounding. Like, as. Until is used in formal English and till is used in informal English. That is the difference between these two, while both of them are synonymous to each other. Upon, yes, on and upon. On is commonly used, whereas upon is formally practiced. जो formal English होती है उसके अंदर upon इस्तेमाल किया जाता है. Now let's talk about the confusing prepositions. Difference between in and into. In, I told you, when something is in the place or space. Now you see, there is an image of cat. Cat is in the cage. So in the demarcation of cage, she is there. So when something is in the space or place, we use in. Into shows movement. Now there is another example. I live in the city. So within the limit of the city I live. Here, into. Look at the image. Kids are getting into the bus. Don't you see movement? Into involves movement. Pour the milk into the cup. When milk is poured into the cup,
Isn't it movement? Yes, movement occurs, doesn't it? Yes, it does. Difference between at and on. At is used either for point of time or point of location. Here you see, I will meet you at 1:30. So at is used for point of time. And look at the other image. A family is waiting at the bus stop. So this is point of location where family stays. On. On we have just discussed. You remember? Physical contact. और टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है, डेट के लिए भी इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल क्या है? वी हैव अ मीटिंग ऑन मंडे. सो वी यूज ऑन विद मंडे. A particular event was celebrated on 10th of the month. So here we have used on with with date. Second example, a pile of books is on the table. You see the physical connection. Book touches with the table. So here on is accurate. Difference between of and of. We have already discussed this a short while back. Of is used for relationship, origin, possession. A cup of. The first example is the book of the teacher is on the shelf. You see the book of the teacher. Making relationship. A cup of coffee. You see. A capital of France. Now here, capital of France, making relationship with origin. So of is proven that this is used for either relationship, possession, or origin. And of is pretty simple. Of is used for non-functionality or removal. It generally denotes a separation, removal, or distance from a surface or a place. Take your shoes off before entering the house, indicating removal. If you watch cricket, you must have heard commentators say wicketkeeper has taken off the bells. So taken off the bells means he has removed the bells. Example number 2, the cat jumped off the table. Jumped off the table means the cat is not on the table anymore. Difference between beside and besides, we have already discussed this. Beside without s next to, and beside with s means in addition to. So keep this in your mind and you are not going to get distracted, because you have very short time in your entry test. So you must keep everything on top slot of your memory. On and onto. Onto is a kind of a preposition which normally comes in competitive examinations, because we do not normally use it, and examiner thinks that test takers are short of knowledge about onto. On फिजिकल कॉन्टेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और ऑन टू जो है वो दैट इंडिकेट्स मूवमेंट. इफ यू लुक एट द फर्स्ट इमेज, द डॉगी जंप्ड ऑन टू द टेबल. Isn't it movement which is occurring? Yes. And in the second image, the dog lay on the table. So this is fixed position. And there is a physical contact between doggy and the table. Since and for. Many people struggle
whether to use since or for, and they end up with an error. Let me tell you this. Since is used for point of time and for is used for period of time, that is duration. पीरियड ऑफ टाइम को हम अरसा कहते हैं उर्दू में, और पॉइंट ऑफ टाइम को हम मुद्दत कहते हैं. व्हेन एनी एक्शन originated from a particular point, event, date, sun, month, hour, we use since. And when that point is converted into either years or months or days or weeks or hours, we use for. जब कोई इवेंट जो है वो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्शन स्टार्ट हुआ 2016 से, तो 2016 इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर दैट एक्शन ओरिजिनेटेड फ्रॉम. तो यहां पर जो है ये पॉइंट है, तो इसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे. एंड व्हेन वी पुट इट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स बीन सिंस 2016? 8. तो जब हम 2016 को नंबर ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 4 आ जाएगा. इसी तरह एक एक्शन जो है वो नवंबर से शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है, तकरीबन 3 महीने हो गए. तो नवंबर जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से वो एक्शन ओरिजिनेट हुआ, और उसको 3 महीने हो गए. या तो हम 3 महीने के लें या फिर हम ये कह लें कि नवंबर से शुरू हुआ हो. सो बात एक ही है, मगर जहां पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहां पर हम सिंस लगाएंगे. लेट्स स्ट्रेंथन योर नॉलेज अबाउट सिंस एंड फॉर विद एग्जाम्पल्स. The first example is, the test takers have been studying seriously for 2 weeks. Here 2 weeks जो है वो period of time है, and we have used for with 2 weeks क्योंकि ये duration है. And second example is, the test takers have been studying seriously since commencement of the admission. तो commencement is a point. जब से एडमिशन शुरू हुए हैं, जब से टेस्ट टेकर्स जो हैं वो सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, और एडमिशन शुरू हुए 2 हफ्ते हो गए, तो कमेंसमेंट को जो है वो हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर ऑफ वीक्स में. तो या तो हम ये कह लें कि टेस्ट टेकर्स जो हैं वो 2 हफ्ते से संजीदगी के साथ मेहनत कर रहे हैं, या हम ये कह लें कि टेस्ट टेकर्स संजीदगी के साथ मेहनत कर रहे हैं जब से एडमिशन शुरू हुए हैं. तो जहां पॉइंट ऑफ टाइम इस्तेमाल करेंगे आप, वहां पर सिंस लगाएंगे. एंड वेयर यू यूज पीरियड ऑफ टाइम, यू विल बी यूजिंग फॉर. सो कमेंसमेंट इज पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम. Conjunctions. Many of you are well familiar with conjunctions. Conjunction means bridge. You see, these are glasses. 2 glasses हैं. अब इनको क्या चीज मिला रही है? Now you see bridge. This is bridge. ये मिला रहा है. तो conjunction भी जो है वो यही काम करता है कि वर्ड्स को मिलाता है, फ्रेजेस को मिलाता है, क्लॉजेस को मिलाता है. तो हमारे पास जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, और को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं. ये जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू माई फ्रेंड बट ही वॉज स्लीपिंग. 2 क्लॉजेस हैं, आई वेंट टू माई फ्रेंड एंड ही वॉज स्लीपिंग. व्हाट ज्वाइंस देम? बट. तो बट जो है वो इधर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. माई फ्रेंड केम टू मी बट
आई डेंट सी हिम। तो हियर बट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है यहां पर, बट, नोर, फॉर, एंड, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ये ब्रिज करते हैं दो मुख्तलिफ क्लॉजेस को। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दो क्लॉजेस होती हैं हमारे पास, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो उसको कहते हैं जो स्टैंड अलोन होती है, विच रिक्वायर्स नो सपोर्ट ऑफ एनी अदर क्लॉज टू गिव क्लियर सेंस, whereas dependent clause requires another clause to be supported with. Example, I refuse to comment because I didn't have all the facts. अब यहां पर देखिए, I refuse to comment is independent clause, ये हमारे पास independent clause हो गई. This is standalone clause. It does not require to be supported with. Because I didn't have all the facts, this is dependent clause. And dependent clause is also called subordinate clause. Either you may call this dependent clause or subordinate clause. It makes no difference at all. Although it was raining, John went for a run. Here, although is subordinating conjunction. Although it was raining. If I ask you, if I say you, although it was raining, I've said this to you, although it was raining. Do you comprehend what I mean to say? No, it incompletes. It requires independent clause to give complete sense. अब यहां पर हम क्या करेंगे? John went for a run. अगरचे बारिश हो रही थी, फिर भी जॉन जो है वो दौड़ने के लिए चला गया। तो here, although it was raining is dependent clause and John went for a run is independent clause, and independent clause is standalone clause. It doesn't need to be supported with any other clause. Although, because, since, unless, if, when, while, after, as soon as well as, so on and so forth. ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। को-रिलेटिव कंजंक्शंस पेयर में होते हैं ये, ईदर और, नीदर नॉर, not only but also. Now you see example, either his friends or he takes initiative. Either and or are correlative conjunctions. You see, but something must be confusing you in this sentence. If you didn't see my lecture about spot the error, I talked about the same in detail. Now you see, here we have used singular verb and there are two subjects, either his friends or he takes. जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है, जो क्लोज होता है वर्ब के, उसी के मुताबिक वर्ब लगता है। अब यहां पर ही इज सिंगुलर, द वर्ब इज सिंगुलर एज वेल। जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक हम सब्जेक्ट नहीं लगा, हम वर्ब नहीं लगाते, वर्ब हम लगाते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब तर होता है। तो यहां पर ही जो है वो करीब तर है, तो हमने क्या किया, टेक्स्ट लगा दिया। ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इज द केस विद verb. So keep it in your mind, and such questions do occur in your entry test, because examiner knows that many of the test takers are not familiar with this rule. Facts about adjective. What does adjective means? Quality. Quality. What we call sift in Urdu. Quality
may be positive, quality may be negative. मगर हम क्या समझते हैं, हम नॉर्मली ये समझते हैं कि सिर्फ जो है वो सिर्फ पॉजिटिव ही होती है. बाज लोग अपनी डिसऑनेस्टी की वजह से जाने जाते हैं और बाज लोग अपनी ऑनेस्टी की वजह से जाने जाते हैं. ही इज ऑनेस्ट एंड समबडी एल्स इज डिसऑनेस्ट. तो जो क्वालिटी होती है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूजेट, ब्यूटिफुल, यूनिक, स्ट्रेंज, अगली, कैंडिड. Are you familiar with candid? How many of you are familiar with candid? Candid means honest, dishonest. This is also a quality. She prepares food. Let me give you the same example. जब आप ये कहते हैं, when you say she prepares food, okay, fine. It may not perhaps affect on her mood. But when you place adjective with it, like she prepares delicious food, you see delicious is in bold letters. So here there must be a smile on her face. So वो यहाँ प्रिपेयर तो कर रही है, मगर किस तरह से कर रही है, कैसे कर रही है? डिलीशियस फूड प्रिपेयर कर रही है. तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी होती है उसको जाहिर करते हैं, और एडवर्ब जो है वो वर्ब की क्वालिटी को जाहिर करते हैं. दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव जो क्वालिटीज होती हैं नाउन और प्रोनाउन की, अगर नाउन की है तो प्रोनाउन की भी होगी, क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन डिटेल. देयर आर वेरियस नंबर ऑफ प्रोनाउंस. The controversial editor angered many readers. Here controversial, editor is a noun. So इधर noun की quality को जाहिर कर रहा है कि editor जो है वो controversial है. The controversial editor angered many readers. So controversial and delicious, both of them are adjective. Degrees. You must be familiar with degrees. Positive degrees, comparative degrees, and superlative degrees. They are all adjectives. Let's take a word smart. When you say he's smart, this is quality. And when you compare somebody with somebody else, so you will be using smarter. And when you put it in superlative degree, it goes to smartest. Here smart is adjective and it is monosyllabic. You know syllable? Syllable means part. Smart एक ही टुकड़ा है, smart. जब हमारे पास दो से ज्यादा syllable होते हैं तो हम more या most लगाते हैं in order to make comparative and superlative degree. और यहां पर smart जो है वो monosyllabic है, तो हम क्या लगाएंगे? You see, smart. So is used to make comparative degree. Amir is smarter than Noman. So here both of them are compared. Or when I say Amir is smartest in the class, so there is no comparison of Amir as far as smartness is concerned. So this is superlative degree and ये monosyllabic है तो est लग गया. Smart, smarter, smartest. Now second one is serious. C-re-us. 3 syllable. So we are not going to place a to make it comparative degree. We are not going to say seriouser. You must not have heard of it. This is nonsense, awkward. So we place more in order to make comparative degree with this because it carries 3 syllables. More serious,
And when we turn it into superlative degree, so we'll be placing most to make it superlative degree. So serious, more serious, most serious. Let me give you another example. Intelligent, 3 syllable, more intelligent. Beautiful, 3 syllable. So more beautiful and most beautiful. मगर ये रूल्स नहीं है, ये मुशाहिदा है. So do not quote this that it always happens. Somewhere there are exceptions as well. Most of the time it happens. Bad and good, they are exception. ये समझ लें, जिस तरह से नॉन रेगुलर वर्ब आपको बताया गया था, इसी तरह से जो है ये बैड और गुड है, से नॉन रेगुलर कंपैरेटिव डिग्रीज हैं. सो बैड, वर्स, वर्स्ट. सो वर्स और वर्स्ट जो है ये भी एंट्री टेस्ट के अंदर आते हैं आपके, क्योंकि एग्जामिनर ये समझता है कि लोगों को ये नहीं पता कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बैड की क्या है. सो दे मस्ट बी कंफ्यूज्ड एंड test takers are confused when it comes to surface, in their entry test. So degrees जो हैं वो भी adjectives होती हैं. Facts about interjections: sudden utterance, strong emotions. ये जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, कभी इमोशंस हमारे होते हैं गम के, कभी खुशी के, कभी हैरानगी के, तो ये हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं. लेट्स लर्न व्हाट इंटरजेक्शन इज. An interjection is a part of speech that expresses strong emotion or sudden burst of feelings. It is often used to convey surprise, joy, excitement, frustration, or other intense emotions. Interjections are typically stand-alone words or phrases and are not grammatically connected to the rest of the sentence. अब हमारे पास ये 3 सिचुएशंस होती हैं हमारे पास. या तो गम की होती है, या खुशी की होती है, या हैरानगी की होती है, और एक और होती है कभी खुशी कभी गम, यानी कि जिसमें हम सरप्राइज भी होते हैं और जो है सोरोफुल भी होते हैं. वाओ, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, that indicates joy. Wow indicates joy. Oh no, it's a mixed surprise and of course a bit of grief. Yahoo, जब कोई अनएक्सपेक्टेड खुशी की खबर मिलती है तो हम एकदम हमारे इमोशंस जो है वो उभर आते हैं और हम कहते हैं याहू. सो एक्चुअली इट शोज जॉय. Hooray! Hooray is also when a team is being defeated and all of a sudden, the team wins. What happens? तो ये हमारे इमोशंस होते हैं. Hooray! Wow! Yahoo! He has hit the jackpot. This is unexpected. So, hooray is also in the line with Yahoo. Ouch! मिक्स्ड इमोशंस. अनएक्सपेक्टेड यानी कि हैरानगी भी है, इसमें एस्टोनिशमेंट भी है और पेन भी है. होता है ना कभी समटाइम्स व्हेन वी गो डाउन स्टेयर एंड वी हैव स्प्रेन, मोच आ जाती है तो एकदम एक आवाज निकलती है आउच. सो वी डू नॉट एक्सपेक्ट दिस, बट देयर इज अ सफरिंग विद इट एज वेल. सो जब हम आउच कहते हैं तो इसमें आपका देयर इज एन एलिमेंट ऑफ astonishment and of course suffering. Alas, pure grief. Hey, in order to seek attention of somebody. So now here all 8 parts of speech are covered. Now tell me honestly, are they difficult? Are they scary? Are they too complicated to understand? As myths and misunderstandings prevail among test takers,
and you must have been studying parts of speech since grade 6, or few of them perhaps even earlier than this. In 7 or 8 years time, you are not good at it because of these myths and misunderstandings. So today you have broken the shackle. So parts of speech are not that difficult. And tell your fellows as well, those who are scared of it. They may think that it's pretty difficult. तो यहाँ पर ये जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है इतने मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ जो है एक मिथ्स जो है वो क्रिएट किए गए हैं, और जिसकी वजह से जो है टेस्ट टेकर्स और जो स्टूडेंट्स हैं दे आर अवे फ्रॉम दिस. वेन एवर इट कम्स टू लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच दे स्केयर. Now, there is a bit of test, and you are going to test yourself. I'm going to give you a common sentence, and you are going to dissect that sentence yourself in parts of speech as you did in the beginning. But this is not the same sentence. Here we go. Every one of you is familiar with this sentence that carries all 26 alphabets. The quick brown fox jumps over the lazy dog with great agility, causing a loud commotion and surprising everyone in the nearby village. I give you 20 seconds to dissect this sentence. If you manage to dissect this sentence accurately, that means you are graduated in parts of speech, if not mastered. Your time starts now. The clock ticks, 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 ticks. Make it quick. I guess few of you are doing good job, and few of you are still finding it difficult. Now think of it, recall what D is, what quick is, what brown is, what fox is, what jumps is, what over is, and you have all gone through a short while back. Now 10 seconds are to go. I guess you are halfway down. Come on. Now you see the direction of arrows. The article, quick, adjective. I have left brown. Fox, noun. Jumps, verb. Over, we have learnt a short while back. This is preposition. D, you know already. Article. Lazy, adjective. Dog, I've left it. With, I've left it too. Great, adjective. Agility, noun. Causing, I haven't told you this. Yes, it is also vacant. Loud, adjective. Commotion, noun. Because shan comes with it. And, conjunction, and, but, because. Surprising, I haven't told you this. Everyone. You remember where we have studied everyone in today's lecture? In pronouns. Indefinite pronouns. You got it? Yes. N, I haven't told you this. D is obviously article. Nearby, adjective. I have left few words into it. I do not know how much you have succeeded in it. But now I fully dissect this sentence. You see,
at a glance all parts of speech. इन तमाम को आप देखें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसको इस सेंटेंस को डाइसेक्ट करें. इफ यू स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड, रिपीट दिस लेक्चर, रिपीट अंटिल यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली. और जब इस सेंटेंस को आप पूरा डाइसेक्ट कर लेंगे तो यू आर गोइंग टू फील एनरिच्ड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच. और एक चीज याद रखें कि ऑल आवर टॉक्स come under the umbrella of parts of speech. Nothing goes beyond that. So if you are not good at parts of speech, you are not good at English. Your confidence will not develop. So I call this confidence builder. Parts of speech is confidence builder. Those who have known about parts of speech, their confidence is sky high. Whether this is verbal communication or written communication. In either case, they do not falter. So, I have come to the end of this lecture. I hope that you would have developed a great deal of knowledge about parts of speech. And if you still something to be desired, you may replay this lecture. Try to understand, reach out to us if you have any ambiguity or complication, and we are not going to let you down. So, it's time to say bye-bye. I thank you for your patience. Allah Hafiz.